Okay, let us start. बैक टेस्टिंग एंड सिमुलेशन. तो वैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 2-3 टर्म्स भी अच्छी है इसमें, नहीं है. वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग देन इट्स स्लाइटली रिपीटेटिव, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू चैप्टर विच एड्रेसेस दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग. अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में जाते हो तो बैक टेस्टिंग विल बी क्वाइट रेलेवेंट. सो बैक टेस्टिंग मीन्स practice of using actual historical data to emulate the investment process in order to determine whether a particular investment strategy or technique have delivered the expected excess returns. Suppose I make a decision that whenever a stock runs up 20% or more in a month, I can sell calls of that stock at a strike price which is again 20% away. Now whether that, I mean logically the strategy sounds to be good. I mean it is logical because इतना बड़ा है तो और 20% बढ़ जाए, it is unlikely. But how it will behave in an actual market scenario, say over last 3 years क्या होता, वो अगर चेक करना है तो बैक टेस्टिंग से हो सकता है. So that is what back testing is. It helps us understand the risk and return. Also, if you are working for some investors, then it can reassure them that models and strategies are likely to perform well. It also helps enormously in risk management. और काफ़ी सालों से, काफ़ी डिकेड से यूज़ होता ही है. Basically, it mimics how investing is accomplished in reality. Obviously, when you are using backtesting as a tool, the implicit assumption is that future will be somewhat similar to past. And you cannot blindly rely on it because it is not often the case. आप देख ही रहे हो, अब चाहे आपने कितना भी बैक टेस्टिंग किया होता, सपोज PSU स्टॉक्स में मैं कॉल बेच रहा हूँ, तो नो हिस्टोरिकल पीरियड वुड हैव टोल्ड मी कि एक एक दिन में 15-15, 20-20, 30-30% बढ़ सकती है PSU जैसी चीज़, बट होता है. So that's an introduction, right? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. देख लो क्विज, 2 ही क्वेश्चन है. 1 में A आएगा, आई थिंक सेकंड में भी A आएगा. Okay. Now they are saying what are the steps in backtesting. So first is obviously strategy design. तो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन में तो आपका मोटिवेशन, आपका इंस्पिरेशन बहुत डाइवर्स हो सकता है और उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर सकते हो, बट उन्होंने इसमें भी डिटेल में समझाया है. तो वी विल सी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन में क्या लिखा है. स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली ऐसी होनी चाहिए, यू कैन क्रिएट हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, एंड यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर फैक्टर्स लाइक कितना टर्नओवर, कॉन्सेंट्रेशन या टाइम होराइजन. सो दे हैव डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, एंड हियर दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल. सपोज माई यूनिवर्स कुड बी F&O stocks which are say 200 stocks in India, but here they are using as an example Russell 3000 index. That is our investment universe. फिर आप रिटर्न को कैसे डिफाइन करोगे.
local currency or foreign currency or what. And also you need to decide whether it will be benchmarked to some index or something. Then how often would you rebalance और उसका कॉस्ट क्या होगा. These are all elements of your strategy. So for every trader it will be different, but you should know. Monthly is quite typical, but shorter या longer भी हो सकता है. Higher frequency तो transaction cost ज़्यादा होगा. And this is an important statement. Many apparent profit opportunities will vanish once you consider trading costs. Then start and end date. Means backtesting में आप कितना long data history use करोगे. Usually managers will have a preference to use long data history so that your confidence is maximum. But if you consider a very long time period, then there will be intervening events when the regime change might happen, right? So you have to be careful. So still we are in strategy design only. Now they could have discussed any particular strategy, but here they are focusing on making a portfolio out of factor portfolios. We have discussed in multi-factor models that there can be different factor portfolios. So just go through the introduction. Obviously you want to have a portfolio based on factors which will outperform your benchmark, and it should make some intuitive or economic sense. If you are just basing your decision on data and there is no economic logic, then it might be the case that you are having a data mining trap. बहुत सारे फैक्टर्स देखोगे तो कुछ तो काम के मिलेंगे. So what they are recommending वो तो लेवल 1 से ही है कि if a factor can successfully pass backtesting but does not make logical or economic sense, then usually as per CFA Institute we should reject the factor. Positive backtesting alone is not everything. पता है ना L1 में भी आता था statistical significance versus economic significance. You need some sort of economic logic. Again they have given giving an example here. And any model, it would be unusual to rely on a single variable. Rather, it is more common to construct a stock selection model that linearly combines several factors. वो तो हमने देखा ही है ना, फार्मा फ्रेंच 3 factor, 4th factor was momentum,
Usually people use multi-factor models. And once you identified the factor portfolios, you can combine them in two ways. First is, remember these names, benchmark portfolio, which weights factors equally. Second is risk parity portfolio, which combines factors so that risk from each factor is equal. Remember these two names, वो पहली बार आ रहे हैं. Then again, for this particular example, they are saying that there could be different styles or factors. So they have selected several basic variables. I mean, this is not particularly linked to the chapter, but ऐसे ही example दे दिया है. पढ़ लो एक बार factors. मतलब अलग अलग फैक्टर्स या थीम्स आप कौन से वेरिएबल से पकड़ सकते हो, उसके एग्जांपल्स दिए हैं. बोलो डन. Gone through these 8 factors. Yes, sir. Okay. Now what they are saying, suppose that we form a portfolio by shorting worst 20% according to a particular factor and buying the best 20%, right? And rebalancing for each factor portfolio is performed monthly. तो उस तरह से आप फैक्टर पोर्टफोलियो बना सकते हो. सपोज यू आर सिलेक्टिंग ग्रोथ, प्राइस मोमेंटम एंड एनालिस्ट सेंटिमेंट. तो ये 3 फैक्टर पोर्टफोलियोज आप बना सकते हो बाय शॉर्टिंग बॉटम 20 एंड गोइंग लॉन्ग ऑन टॉप 20 फॉर एग्जांपल. तो वो फैक्टर पोर्टफोलियो बन गए, फिर उसको कंबाइन करना है. तो देर आर 2 मेथड्स. सपोज फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल बेंचमार्क पोर्टफोलियो. मतलब 3 फैक्टर्स है तो 33% डाल दो. एंड सरप्राइजिंगली इट हैज बीन फाउंड टू परफॉर्म सिमिलर टू पोर्टफोलियोज दैट यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेइंग स्कीम्स. एंड ऑल्टरनेटिवली you allocate to 3 portfolios so that each one contributes equally to the risk. That will require some sort of optimization, mathematical tools, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. And that is called RP portfolio, risk parity. As I said, these are terms which are coming for the first time, तो याद रख लो. So I think this first step was very generic. इसमें कुछ नया नहीं है. वो तो आपके ऊपर है कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे. बट नाउ दिस इज स्लाइटली टेक्निकल और दिस इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू द चैप्टर. सो स्टेप 2, एक्चुअल हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट सिमुलेशन.
So we create the portfolio to be evaluated, rebalance according to our predetermined frequency. अपने एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी मंथली है. Actual construction of the portfolio will be guided by the investment strategy and whatever constraints that you have. So now comes rolling window back testing. So backtesting is used to evaluate for example, the viability of a factor. In this approach, investor will use a walk forward rolling window system rather than dividing the data into just two samples. In this method, investor will calibrate the trade signals or factors based on the moving window, adjust the model, and rebalance the portfolio after each period as new information arrives, and that track performance over the long term. So in this way, backtesting simulates real investing. मतलब सिंपल, सपोज 100 दिन का डेटा है मेरे पास, तो एवरी 10 डे कैसा परफॉर्म कर रहा है, और सपोज एवरी 10 डे आई एम गोइंग टू रीबैलेंस, तो कैसा रिजल्ट मिल रहा है. Although model parameters are continually tuned over time, the primary model methodology is fixed in advance. तो ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जस्ट गो थ्रू इट. जस्ट गो थ्रू इट, आराम से पढ़ो, मैं समझाता हूँ फिर. ये पता चला, as on 30th November 2023 you are measuring earnings yield and implementing your strategy on paper. You long top 20%, short bottom 20%, and then you see over the next 1 month how does the strategy perform. December 2023 में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay. Then we advance 1 month in time, repeat the process as on 31st December 2023. Isn't it? और इसमें क्या होगा, one piece of out sample data December 2023 now becomes in sample, because now 31st December 2023 we will again evaluate the earnings yield for the last 12 months, और मतलब रिकैलिब्रेट करेंगे टॉप 20% बॉटम 20%. और सपोज हमारे पास जितना डेटा है नवंबर 23 से सपोज अप्रैल 24, वो एक एक मंथ का करते करते वी विल कवर द एंटायर टाइम स्पान, एंड देन वी कैन कैलकुलेट परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्ट्रेटेजी. यू कैन फाइंड आउट थिंग्स लाइक एवरेज रिटर्न, रिस्क, ड्रॉडाउन एंड शार्प रेशियो. एंड वो जो आउट ऑफ टेस्ट पीरियड्स थे, मतलब आफ्टर नवंबर 30, 2023, अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करता है और कुछ इकोनॉमिक लॉजिक है तो वी विल एक्सेप्ट इट.
और assumption तो वही है, same pattern of past performance is expected to repeat over time. Hello. Yes. Sir, last second paragraph now we measure the performance લખેલું છે. So that is based on the top 20 stocks we have gone long and bottom 20 we have got short. हाँ हाँ, तो એ આપણે ચેન્જ કરતા રહેશું લાઈક ડિસેમ્બર हाँ चेंज करता रहे. yes. ઓકે. What we are saying that, say on every month we will go top 20%, bottom 20%. પણ સ્ટોક્સ ચેન્જ થઈ રાખશે એમાં, એટલે આપણે આપણી સ્ટ્રેટેજી ફાઇન ટ્યુન કરતા જઈશું. ઓકે. अच्छा, so this they have discussed for one factor. Now they are saying कि भाई if there are multiple factors then backtesting is somewhat complex because we also need to execute this process twice or whatever. First we construct 8 factor portfolios जो हमने अभी देखा, and then the second aspect will be you will have to combine either on BM basis or RP basis to create a multi-factor portfolio. Second rolling window process is used to determine covariances and create the RP portfolio. मतलब अगर रिस्क पैरिटी है तो कंट्रीब्यूशन रिस्क का इक्वल होना चाहिए, तो अभी वो तो 8 पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है कॉम्बिनेशन का, तो यू विल नीड वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस. सो दैट विल रिक्वायर more complex calculations and more simulations. Both BM and RP portfolios are rebalanced monthly to maintain risk parity or equal weighing as appropriate. Then again these portfolios are analyzed. So this was the actual back testing, and then you analyze the output. तो इसमें again they have mentioned pharma friend study. पढ़ो एक बार, this is nothing new, ये पहले पढ़ चुके हैं, but go through once. मतलब this is essentially what they discussed before also, लॉन्ग टॉप क्विंटाइल और शॉर्ट बॉटम क्विंटाइल करने का. तो लॉन्ग शॉर्ट हेज पोर्टफोलियो मतलब फैक्टर पोर्टफोलियो बन जाएगा ये. So I really don't know why they have included this. This is just a repetition of what we have studied. समझ में आ रहा है ना? Any doubts? No, sir. No. Okay. Comparing the results of backtesting methodologies. Testing can show that different backtesting methods will produce results that are
somewhat or completely different. For example, if there is a non-linear relationship between factor and returns, one metric may suggest significant results while other may not. No perfect formula exists for determining which methodology to employ. Ideally, multiple methods will suggest similar results, but this is ideally, or rather hopefully. ठीक है ना? ट्राई करो क्विज. फर्स्ट में क्या आएगा? सी. सेकंड में भी सी, राइट? थर्ड इज ऑल्सो सी. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then see, now this is a repetition of what we studied in market risk chapter, right? What are the various metrics or measures for quantifying risk? तो शार्प रेशियो, सॉर्टिंग रेशियो, ये सब तो है. You can do value at risk, right? We all know uses of VR, its limitations. Unfortunately, VAR is sensitive to our assumptions about shape of distribution. And if you consider expected value of the tail, then it is conditional VAR. Average loss once VAR cutoff is exceeded. Then maximum drawdown means peak to trough. What will be the dollar amount of loss? Based on idea that the best indication of downside risk is actual past loss events. CTAs and hedge funds often use maximum drawdown. Then you can have some visual methods, visual tools. It can be useful to examine long-term cumulative return performance of an investment strategy by plotting it using a logarithmic scale. Because cumulative होंगे तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आएंगे, तो सिंपल स्केल पे नहीं बैठेगा. यू कैन यूज लॉग स्केल. एंड एडवांटेज इज दिस मेक्स equivalent percentage changes span the same vertical distance on y axis. समझ में आ रहा है ये सेंटेंस?
नॉर्मल परसेंटेज में क्या होता है, योर 100 to 200, मतलब 100 है तब 50% गेन हुआ, दैट इज वर्थ $50, और 200 में 50% हुआ तो दैट इज वर्थ $100. बट जब लॉगरिथमिक करोगे तो सेम ही आएगा, एंड इट कैन हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चरल ब्रेक्स एंड परफॉर्म्स डीके. इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग डाउनसाइड रिस्क. देन प्रॉब्लम्स इन अ बैक टेस्ट. तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बार सुना होगा, सर्वाइवरशिप बायस. It occurs when at a particular point in time we consider only those firms or stocks that have remained in existence till that time. Most well known but also most common error. और ये अच्छा लिखा है कि अभी क्या एग्जिस्टेंस में, वो तो इजी है, बट 10 साल पहले टोटल क्या एग्जिस्टेंस था और उसमें से कौन ड्रॉप आउट हो गया, दैट डेटा इज यूजुअली डिफिकल्ट टू एक्सेस. इन्होंने फिर यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दे हैव गिवन इट इन अ वेरी कर्सरी मैनर. यूज पॉइंट इन टाइम डेटा, बट हिस्टोरिकल डेटा तो चाहिएगा ना. Then again, this is all very general reasons why companies can drop out and why new firms will appear. Then they have given data of Russell 3000. Then to make matters worse, look at this, what they are saying. Backtesting using only stocks that have endured through time. मतलब you are overcoming survivorship bias, but that can also introduce significant bias and can even produce results that are opposite to the correct conclusion. So there is no good solution to this. And keeping track of hundreds of securities over long periods is not simple. तो अभी जो एग्जिस्टेंस में वही यूज करते हैं तो सर्वाइवरशिप बायस लगेगा. But at least remember this term, point in time data. Rather than using only existing or surviving stocks. Just go through the example once.
Done. जाए आगे. Yes, sir. Okay, then second bias is look ahead bias. This is also common error when you are doing backtesting. Arises when an investor makes use of data that would not have been available at the time an investment decision is made. It can come about due to reporting lag, which refers to a situation where data describing a period is often available only after the period ends. And this is more to do with how practically data is made available. Not all data vendors provide point in time data. We may need to make some adjustments. For instance, this is a good example. If a firm's financial quarter ends on 31st December 2023, तो उसी दिन आपको डेटा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा. Many large cap firms report earnings with lag of 30 to 50 days. Smaller firms can even take more time. Our first approach would be to make some assumption about reporting lag. If we make the assumption that earning data for all companies is available a month later, say 31st January 2024, we would encounter look ahead bias with firms that took longer than a month to report earnings. So this is one example. Conversely, if we used a 3-month lag and assume earnings were available on 31st March, we would be introducing the problem of stale data into our analysis, and our backtest would be overly conservative. Using point in time data is preferable to having to make these kinds of assumptions and adjustments. और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में भी ऐसा होता रहता है, रिविजन्स आते रहते हैं. वेंडर्स डेटा मे रिफ्लेक्ट करंट और करेक्टेड डेटा. अपना नहीं होता इफ यू फॉलो द बजट्स, budgeted estimate, revised estimate, actual, there are all kinds of stages. So right now the data that you are seeing, it can be very different from the information originally available. Means जब डिसीजन लेना था तब ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, अलग इंफॉर्मेशन या कम इंफॉर्मेशन था. दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ लुक एट बायस. और ये डेटा स्नूपिंग तो फिर से आ रहा है. इट इज अनदर नेम फॉर डेटा माइनिंग. मीन्स यू कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट slices of data till you find a result which suits your theory. Practice of backtesting numerous strategies and then selecting the best performing one rather than doing something based on sound theory is problematic. Means you are just looking for some data that gives you results. That is data snooping, sometimes called p hacking. P for p value. और उसका सॉल्यूशन ये है, यू यूज अ हायर देन नॉर्मल क्रिटिकल टी स्टैटिस्टिक. यूजुअली टी इज इक्वल टू 2 कट ऑफ होता है, बट यू यूज 3 या इक्विवेलेंटली P.05 के बदले थोड़ा और कम यूज करो. सपोज another method is cross validation. You test the hypothesis on a different set of data. This is also a very good solution than the one that was initially used.
to form the inference or test the hypothesis. जो इनिशियल डेटा है वो ट्रेनिंग डेटा, चेक करोगे जिस डेटा पे वो वैलिडेशन डेटा है. एंड रोलिंग विंडो बैक टेस्टिंग इज यूजुअली अ टाइप ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, क्योंकि आपके फर्स्ट 12 मंथ से वो ट्रेनिंग डेटा है और फिर एक एक महीने का वैलिडेशन डेटा आता जाता है. देख लो क्विज. डन. फर्स्ट में क्या है? सर सी. एकदम खबर नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑप्शन बना दिए. सेकंड इज ऑल्सो सी, राइट? यस सर. ओके. देन अगेन एज आई सेड देयर विल बी रिपीटिशंस. ये फिर से सब आ रहा है. सिनेरियो एनालिसिस एंड सेंसिटिविटी. यू कैन डू अ हिस्टोरिकल सिनेरियो एनालिसिस, और सिनेरियो बहुत गंदा है तो देन इट इज हिस्टोरिकल स्ट्रेस टेस्टिंग. Two typical examples of regime changes are when volatility changes or when economy switches from downturn to expansion. मतलब usually these periods are quite volatile and they present some unique challenges. मतलब ऐसे आप चूज कर सकते हो हिस्टोरिकल सिनेरियो एनालिसिस के लिए ऐसे पीरियड्स. रिसेशन वर्सेस एक्सपांशन में प्रॉब्लम ये है कि उसका स्टार्टिंग और कट ऑफ डेट इट इज ओनली अवेलेबल आफ्टर द फैक्ट, जो यहाँ पे मेंशन किया है. और दूसरा वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये इंटरेस्टिंग है. वी डिफाइन अ हाई वॉलेटिलिटी पीरियड एज वन वेयर विक्स इज अबव इट्स 5-year मूविंग एवरेज versus when it is below. दूसरे भी सिनेरियोज लिखे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट के पहले और बाद में, ऐसा कुछ. they are saying RP strategy is likely to be more resilient in a recession compared to BM strategy.
and it should also perform well in low as well as high volatility regime. We can also use a probability density plot. For example, return distribution for BM and RP strategies has been found to be more dispersed in an expansionary environment than recessionary. मतलब ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसा है, ट्राई टू रिमेंबर, एक आधा एमसीक्यू आ जाए तो. दूसरा प्रॉपर्टी है कि बीएम जो है उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस देखा गया है एंड फैट टेल्स. In general, remember RP is lower risk, low volatility, lower kurtosis. फिर you can also do simulation. बैक टेस्टिंग में तो चलो बराबर है, but you want to have some sense of how your strategy will perform, तो you can do simulation. ये सब पुराना ही लिखा है. If you rely too much on covariance, variance, etc., then underlying assumption is normality, but actual return distributions have been found to be not normal, having also higher kurtosis. So basically you can supplement rolling window backtesting with scenario analysis and simulation. तो सिमुलेशन में अगेन एक तो हिस्टोरिकल और दूसरा मॉन्टे कार्लो. गो थ्रू दिस फर्स्ट पैरा. So they are saying backtesting is good but not enough. We also need another tool which is simulation, and two primary classes are historical and Monte Carlo. तो भाई हिस्टोरिकल में भी पुराना डेटा ही लोगे ना. So we select past returns at random from a long historical period without regard to the order of occurrence. मतलब मेरे पास 10 साल का डेटा है, राइट. सो 500 वीक्स का डेटा है, रैंडमली 50 वीक्स में सिलेक्ट करता रहता हूँ. सो वी रैंडमली सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एसेट रिटर्न्स, वेयर ईच सेट ऑफ पास्ट मंथली रिटर्न्स इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड. सो दिस इज अ बिट सिमिलर टू रोलिंग विंडो बैक टेस्टिंग, बट रोलिंग विंडो में क्या था, सीक्वेंस था. So now we are abandoning the time sequence. That is what it is. So we are basically now subjecting data to more random occurrences in a historical simulation. And banks and other financial institutions make extensive use of historical simulation to evaluate risk. Then if you don't want to rely on actual past data, you can synthetically create data, which is called Monte Carlo simulation. So for every variable you can have a statistical distribution and you can decide on the parameters. So you artificially create data and then draw random observations. Monte Carlo approach is very flexible, allowing variety of distributions. डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी ले सकते हो आप.
there is no need to force a normal distribution. Downside is complexity. You need significant computing power. Then they have given steps for simulation. Just go through. ये भी बहुत बार आ चुका है, right? थाउजेंड to 10,000 ट्रायल्स या रन्स. Done.